हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आप लोगों का। प्रैक्टिकल हम यहाँ पर देख रहे थे, हमारा प्रैक्टिकल चल रहा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप। आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी होती है, उनके लिए टेस्ट लगाने होते हैं, जिसमें आपने स्टार्ट किया था टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन से, देन अल्कोहलिक ग्रुप, देन टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप पर हम बात कर रहे थे। तो उसी पर हम आगे चर्चा करते हैं, और जिसमें कि प्रोसीजर आप लोग देख रहे थे कि कौन कौन से टेस्ट हम लगाएंगे एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप के लिए। जहां पर एल्डिहाइड के टेस्ट आपने लगा लिए थे और कीटोन के लिए आप देख रहे थे कि एक मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन टेस्ट होता है और दूसरा होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। पहले तो आपने कार्बोनिल ग्रुप के लिए टेस्ट लगाए, ठीक है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप में आपका दोनों ही आते हैं, एल्डिहाइड भी आता है और कीटोन भी आता है। फिर आपने पर्टिकुलर एल्डिहाइड के लिए टेस्ट देखे और फिर अभी हम देख रहे हैं कीटोनिक ग्रुप के लिए, ठीक है ना। तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन टेस्ट, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। आप क्या क्या करेंगे स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें स्मॉल क्वांटिटी में, कम मात्रा में आप क्या लेंगे, वो कंपाउंड लेंगे। देन add about 0.1 gram of finely powdered मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, और उसमें क्या डालेंगे आप 0.1 ग्राम के लगभग जो आपका मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन है उसका फाइन पाउडर आप उसमें ऐड करेंगे। नाउ ऐड अबाउट 1 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड शेक इट वेल। ओके, क्या करेंगे अब उसमें आप 1 ml के लगभग क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालेंगे और उसके बाद उसे शेक करेंगे। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या देखने को मिलता है, वायलेट कलर इज फॉर्म्ड विच स्लोली फेड्स अवे। वायलेट कलर फॉर्म होगा जो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये आपको क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप इज कंफर्म्ड, यानी कि कीटोनिक ग्रुप वहां पर उपस्थित होगा, ये कंफर्म कर दिया। देन सेकंड है आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट भी आपका कीटोन के लिए लगाया जाता है। dissolve a small quantity of sodium nitroprusside in about 1 ml of distilled water in a clean test tube। एक clean test tube लेंगे, साफ परख नली लेंगे, उस परख नली में आप क्या डालेंगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालेंगे 1 ml डिस्टिल वाटर में। ओके, देन ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड। देन आप उसमें बहुत कम मात्रा में जो कंपाउंड आपको दिया गया है वो डालेंगे। शेक द टेस्ट ट्यूब वेल एंड ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप वाइज। अब आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से शेक करेंगे और ड्रॉप वाइज उसमें यानी बूंद बूंद करके उसमें क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालेंगे। कुछ नहीं किया है आपने, एक टेस्ट ट्यूब ली है उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और 1 जो आपका ml वाटर है उसका डिस्टिल वाटर, वो दोनों मिलाए हैं। देन उसमें कंपाउंड डाला है। देन उसमें आप ड्रॉप वाइज क्या कर रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाल रहे हो। तो आपको ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिलता है, रेड कलरेशन, प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप इज कंफर्म। रेड कलर दिखेगा तो दैट मीन्स वहां पर आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपका हो गया प्रोसीजर। अभी एनिमेटेड वीडियो आप लोग इसकी देख लेंगे किस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल चलेगा। Chloride and sodium hydroxide quantity of concentrated sulfuric acid to the test tube. Keep the contents of the test tube in. Test for aldehydic and take a few drops of given unknown. Test for ketones. Dinitrobenzene test. Procedure. Take a dropper. Take some drops of given liquid. Pour it into a test tube. Add a small amount of powdered M-dinitrobenzene to it. Take a small quantity of sodium hydroxide solution using a dropper. Add a small amount of dilute sodium hydroxide solution to it.
Shake well. Appearance of a violet color that slowly fades confirms ketonic group. Sodium nitroprusside test. Procedure. Take a spatula. Take some crystals of sodium nitroprusside into a test tube. Add some amount of distilled water to it and shake the test tube well. Take a small amount of given compound using a spatula. Add it into the test tube. Shake well. Add some drops of sodium hydroxide solution. The anion of the ketone formed by an alkali reacts with nitroprusside ion to form a red-colored complex. Tests for carboxylic group. कीटोनिक ग्रुप के लिए आप अभी टेस्ट देख लेंगे रियल वीडियो के थ्रू. Tests for ketones. Ketones are organic compounds containing the ketonic functional group in which the carbonyl carbon is attached to two R groups. The R groups may be alkyl or aryl groups. The flavors of berries and mushrooms are due to the presence of ketones. Our aim here is to identify ketones using some simple tests. They are 2,4-dinitrophenylhydrazine test, sodium bisulfite test, meta-dinitrobenzene test, sodium nitroprusside test. 2,4-dinitrophenylhydrazine test. Materials required: organic compound, rectified spirit, 2,4-dinitrophenylhydrazine solution, test tube and droppers. Procedure. Take a small quantity of organic compound in a test tube. To this, add a small amount of rectified spirit using a dropper. Shake the test tube well to dissolve the compound in rectified spirit. Using another dropper, add a small quantity of 2,4-dinitrophenylhydrazine solution into the test tube. 2,4-dinitrophenylhydrazine reacts with the carbonyl group present in ketone to form a yellow or orange precipitate of 2,4-dinitrophenylhydrazone. Sodium bisulfite test. Materials required: organic compound, saturated solution of sodium bisulfite, dropper and a cork. Procedure. Take a small quantity of saturated solution of sodium bisulfite in a boiling tube. To this, add a small quantity of organic compound using a dropper. Cork the test tube with the cork and shake it well and leave it for some time. Ketone gives an addition product with sodium bisulfite, which is white crystalline in nature. Meta-dinitrobenzene test. Materials required: organic compound, meta-dinitrobenzene, dilute sodium hydroxide, test tube, spatula, and dropper. Procedure. Take a small quantity of organic compound in a test tube. To this, add a small quantity of meta-dinitrobenzene using a spatula. Using a dropper, add a small amount of dilute sodium hydroxide solution to the test tube. Shake the test tube well. Ketones on reaction with meta-dinitrobenzene and sodium hydroxide give a violet coloration that slowly fades away. Sodium nitroprusside test. Materials required: organic compound, sodium nitroprusside crystals, dilute sodium hydroxide,
distilled water, test tube, dropper, and spatula. Procedure. Using a spatula, take a few crystals of sodium nitroprusside in a test tube. Add a small amount of distilled water to the test tube. Shake the test tube well to dissolve the crystals in water. To this solution, add a small quantity of organic compound. Now, add a small quantity of dilute sodium hydroxide solution using another dropper. The anion of the ketone formed by sodium hydroxide reacts with nitroprusside ion to form a red-colored complex. प्रोसीजर आप इसका नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर हम टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पहला है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट लगाएंगे, लिटमस पेपर का यूज करेंगे। प्रोसीजर क्या है? प्लेस अ ड्रॉप ऑफ द गिवन लिक्विड और अ क्रिस्टल इफ सॉलिड ऑन अ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर लेंगे ब्लू कलर का, मॉइस्ट होगा जो नम लिटमस पेपर लेंगे। ऑब्जर्वेशन आपको क्या देखने को मिलेगी? ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड। ओके, ब्लू लिटमस पेपर जो है आपका वो रेड में कन्वर्ट हो चेंज हो जाएगा, आप बोल सकते हैं उसका कलर। प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये क्या शो करता है कि वहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है आपका। सेकंड है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, जिसमें आप क्या करेंगे? टेक 1 ml ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका 1 ml ले लेंगे आप इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में, एक परख नली में, एंड एड अ पिंच ऑफ सोडियम बाय कार्बोनेट टू इट। ओके, अब इसमें क्या डालेंगे आप? एक पिंच के बराबर सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें डाल देंगे। क्या देखने को मिलेगा? ब्रिस्क एफरवेसेंस इज ऑब्जर्व। ओके, देन इसका मतलब भी क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप वहां पर आपका उपस्थित है। एस्टर टेस्ट लगाएंगे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो क्या करते हैं? किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आपका बनता है, जिसको कि आप एस्टर कहते हैं। एस्टरिफिकेशन भी इस रिएक्शन को आपका कहा जाता है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड add 1 ml of ethyl alcohol and 1-2 drops of concentrated sulfuric acid into it. Heat the reaction mixture on a water bath for about 5 minutes. Pour the mixture into a beaker containing water. ठीक है ना? क्या किया आपने? आपने एक टेस्ट ट्यूब में जो कंपाउंड था वो लिया, उसके बाद उसमें 1 ml इथाइल एल्कोहल डाला, देन 1-2 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने उसमें डाला, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली, हीट किया, ऊष्मा दी उस रिएक्शन मिक्सचर को वाटर बाथ के ऊपर 5 मिनट के लिए। देन उस रिएक्शन मिक्सचर को आपने क्या किया? वो जिस बीकर में पानी रखा था उसमें आपने डाल दिया। देन यू गेट अ फ्रूटी स्मेल, आपको फलों के समान एक गंध मिलेगी वहां पर, या प्लीजेंट स्मेल आपको वहां पर आएगी। और वो किसकी होती है? वो एस्टर की होती है। ठीक है ना? एस्टरिफिकेशन भी इस रिएक्शन को कहा जाता है। ये भी क्या करता है? कंफर्म कि वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका प्रेजेंट है। ओके, तो ये तो हो गया प्रोसीजर। ठीक है ना? थ्योरी में आपने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? COOH ग्रुप आपका होता है। ठीक है ना? ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? COOH। ठीक है ना? एक साइड कार्बन से आपका डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है और एक साइड OH जुड़ा होता है। ठीक है, सबसे पहला जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसमें एक ही कार्बन है, वो भी कार्बोक्सिल समूह का है, तो उसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, देन एसिटिक एसिड आपका आता है। ये बेंजीन रिंग से अगर COH जुड़ गया तो इसको बेंजोइक एसिड कहा जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका थ्योरी में आएगा लिटमस टेस्ट, जिसमें आप दिखा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। The hydroxyl group in carboxylic is far more acidic than that in alcohol. अल्कोहल का जो OH ग्रुप है उसकी तुलना में कार्बोक्सिलिक के ऊपर जो OH है वो क्या है? ज्यादा आपका एसिडिक है। द डिसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज, तो इस तरह से आपका कार्बोक्सिलिक समूह जो है उसका डिसोसिएशन अपघटन होता है इस रिएक्शन में दिखाया गया है। तो RCOO निगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव में आपका वो टूटेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, जो दूसरा टेस्ट हमने देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस
which can be seen in the form of a brisk effervescence. ओके, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है और क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके कारण की ब्रिस्क एफरवेसेंस वहां पर बन रही है। ओके, एस्टर टेस्ट जो हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी जिसे हम बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with alcohol in presence of concentrated sulfuric acid to form ester that is identified by the presence of a fruity smell. ओके, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका अभिक्रिया करेगा एक अल्कोहल के साथ और एक प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड वहां पर फॉर्म होगा। फलों के पकने की जो गंध होती है उसी के समान एक गंध वहां पर आपको पता चलेगी। तो वो गंध किसके कारण है, वो इस एस्टर के कारण है। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ने रिएक्ट करके आपका एस्टर वहां पर बना दिया है। ठीक है, तो पहले थ्योरी में आप ये नोट कर लेंगे पूरा। ओके, देन हम आपका वीडियो देखते हैं कि किस प्रकार से ये तीनों रिएक्शंस आप लैब में करेंगे। ओके, चलिए एनिमेटेड वीडियो के थ्रू समझते हैं प्रोसीजर को। Dilute NaOH solution in it. Pour it into the same test tube. Tests for ketones. M-dinitrobenzene test. Procedure. Take a drop of blue litmus red, indicating it is acid using another dropper. Fill the test tube for 5 minutes. Pour it into a small beaker containing distilled water. Sodium bicarbonate test. Add some drops of sodium hydroxide. Formed by an alkali, reacts with nitroprusside ion to form a red-colored complex. Tests for कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए आप टेस्ट के लिए यहाँ पर प्रोसीजर देखेंगे। carboxylic group. Sodium bicarbonate test. Procedure. Take a drops of unknown solution. Add it into the test tube. Take a small quantity of sodium bicarbonate using a spatula. Add it into the test tube. Carboxylic acid reacts with sodium bicarbonate to produce brisk effervescence due to the formation of carbon dioxide gas. Ester test. Procedure. Take a dropper. Take a few drops of unknown solution. Add it into the test tube. Take a few drops of ethyl alcohol using a dropper. Add ethyl alcohol into the test tube. Take 1 to 2 drops of concentrated sulfuric acid using another dropper. Add it into the test tube. Take the test tube, place it in a boiling water bath and heat the contents of the test tube for 5 minutes. Pour it into a small beaker containing distilled water. Carboxylic acid reacts with alcohol in the acidic medium to produce fruity smelling compounds called esters. Litmus test. Procedure. Take a small quantity of unknown solution using a dropper. Drop 2 to 3 drops of it on a moist blue litmus paper. Carboxylic acid turns blue litmus red, indicating it is acidic in nature. Test for amino group. Litmus test. रियल लैब वीडियो आप लोग देख लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए।
Tests for carboxylic acids. Carboxylic acids are organic compounds containing the carboxyl functional group. It is of two types, aliphatic and aromatic. Formic acid and acetic acid are the simplest aliphatic acid, and benzoic acid is the simplest aromatic acid. The fruits such as lemon, grape, orange, and green apple also contain carboxylic acid. Our aim here is to identify carboxylic acids using some simple tests. They are litmus test, sodium bicarbonate test, ester test. Litmus test. Materials required: organic compounds, moist blue litmus paper, and dropper. Procedure: take a small quantity of organic compound using a dropper. Put 1 or 2 drops of the compound onto the moist blue litmus paper. Carboxylic acid turns blue litmus red, indicating it is acidic in nature. Sodium bicarbonate test. Materials required: organic compound, sodium bicarbonate, test tube, and spatula. Procedure: take a small quantity of organic compound in a test tube. Using a spatula, add a small quantity of sodium bicarbonate to the compound. Carboxylic acid reacts with sodium bicarbonate to produce carbon dioxide gas, which appears as brisk effervescence. Ester test. Materials required: organic compound, ethyl alcohol, concentrated sulfuric acid, distilled water, test tube, droppers, and water bath. Procedure: take a small quantity of organic compound in a test tube. Using a dropper, add a small quantity of ethyl alcohol into the test tube. Using another dropper, add a few drops of concentrated sulfuric acid into the test tube. Heat the reaction mixture in a water bath for a few minutes. Now, pour the reaction mixture into distilled water taken in a beaker. Carboxylic acid reacts with alcohol in the acidic medium to produce fruity smelling compound called ester. Precautions: handle concentrated sulfuric acid with proper care. Heating should be done very carefully. तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हो गया आज का टेस्ट। आने वाले सेशन में हम अमीनो ग्रुप के टेस्ट देखेंगे। आज के सेशन में जहां आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखा, आने वाले सेशन में हम टेस्ट फॉर अमाइंस देखेंगे, जिसमें आप होमवर्क में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन एक बार पढ़ के आएंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, देन हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट देखेंगे, लिटमस टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट, एजोडाई टेस्ट। ओके, तो ये सारे टेस्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके अलावा डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में आप डिफरेंस निकालने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस एसिड टेस्ट लगाएंगे। इसके अलावा हिंसबर्ग टेस्ट देखेंगे। ये सारी आपकी रिएक्शन ही है जो थ्योरी में आपने पढ़ी है, जो यहाँ आप टेस्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसका प्रोसीजर देखेंगे, वही एनिमेटेड वीडियो और रियल लैब वीडियो देखेंगे, जिससे आपको आइडिया आएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी लैब में प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जो आज प्रोसीजर आप लोगों ने देखा, ऐसे ही इसी प्रोसीजर के थ्रू आप ये प्रैक्टिकल अपनी लैब में भी परफॉर्म करेंगे, देन रिजल्ट नोट करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम एक नए प्रैक्टिकल के साथ आएंगे जो कि अमाइंस के लिए है, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।